DBT Star College Scheme. I'm extremely pleased today to inaugurate the outreach program under DBT Star Scheme under the banner of Science and Society. Science generates solutions for everyday life and helps us to answer the great mysteries of the universe. Science is one of the most important channels of knowledge. It has a specific role as well as a variety of functions for the benefit of our society, creating new knowledge, improving education, and increasing the quality of our lives. Science must respond to societal needs and global challenges. Science is the greatest collective endeavor. It contributes to ensuring a longer and healthier life, monitors our health, provides medicine to cure our diseases. It alleviates aches and pains, helps us to provide water for our basic needs, including our food, provides energy, and makes life more fun, including sports, music, entertainment, and the latest communication technology. Last but not the least, it nourishes our spirit. Public understanding and engagement with science and citizen participation, including through the popularization of science, are essential to equip citizens to make informed personal and professional choices. Governments need to make decisions based on quality scientific information on issues such as health and agriculture. National government need to understand the science behind major global challenges such as climate change, ocean health, biodiversity, loss, and freshwater security. To face sustainable challenges, the government and citizens need to change their entire scenario and need to improve the society. On the other hand, scientists must understand the problems and the policymakers must take endeavors to do relevant research in relevant disciplines in order to make a clear-cut choice what the society needs at a particular hour and a particular time. Challenges today cut across the traditional boundaries of disciplines and stretch across the life cycle of innovation from research to knowledge development and its application. Science, technology, and innovation must drive our pursuit of more equitable and sustainable development. The COVID-19 pandemic led to surprising and unexpected experiences. This pandemic impacted the social and educational aspects globally. This crisis has exposed many inadequacies and inequities in our education system, from access to the broadband and computers needed for online education. The supportive environments were minimal, and in the remote villages, the education system was not showing up to mark. The lockdowns in response to COVID-19 have interrupted conventional schooling with nationwide school closures, the majority lasting at least 10 weeks. The only option for learning was through internet, television, or radio. Teachers also had to develop new pedagogical tools and techniques and designing lectures on the digital platforms.
Definitely, various softwares were developed and various mobile apps were developed. So, one hand, we are definitely gaining, but on the other line, we have lost lives of several and several. As we analyze the cost of the pandemic, we use the term unfinished learning. And if there is unfinished learning, whosoever goes to higher studies definitely will move ahead without proper knowledge. This is the biggest challenge of COVID. Right now, COVID 19 is still threatening the cohesiveness of human relationships. The lockdowns are creating a fractured world of isolated individuals, and still we are going through a phase where we are not at all realizing what is going to happen the next. So, one lockdown, two lockdown, third lockdown. So these are some of the pertinent questions related to COVID-19 pandemic. Today, I'm extremely pleased to inaugurate this outreach program under the title Science and Society to conduct civic discussions to bring forth several challenges, outcomes, and remedies. The first one in this outreach program by our keynote speaker, Professor Sunit Kumar Singh. Today, we have with us such an eminent scientist, Professor Sunit Kumar Singh, Head Molecular Biology Unit, IMS BHU. His work area is molecular pathogenesis of emerging and emerging viruses. The topic chosen for his interactive program today is SARS-CoV-2. What have we learned so far? Professor Singh has been doing marvelous research in the area of virology, especially Zika virus, Chikungunya, and SARS-CoV virus. Professor Singh has unraveled several intricacies of airborne transmission of SARS-CoV-2. We are extremely thankful to Professor Sunit Kumar Singh for joining with us for his deliberation on SARS-CoV-2. I hope that we will learn a lot today in this interactive session for our societal needs. A request to all the participants who are watching live on YouTube, kindly put up your questions with your name and a short address in the comment section of the YouTube, and it will be definitely answered by such an eminent person who is with us today. So I once again invite you, sir, and I'm extremely grateful to you that you accepted our proposal and you are here with us today. So, sir, please start with it. Thank you very much, Dr. Tumul. I am very happy that you have taken lead to organize this program under DBT Star College scheme. And I have been observing that you have been quite active to, take the messages whatever generates in the laboratory to the common public. And I think that is the need of the day today. So I would like to, discuss in brief about SARS-CoV-2, that what we have learned so far. And I would be more than happy if there will be more questions. I think nowadays there are a lot of misinformations around, so I'd be more than happy to take those things, at the end of the presentation, probably. So let me go first to presentation mode, please. So as we have seen that SARS-CoV-2, 1 minute. I am not able to move my slides.
Hello. Somebody's controlling from that side my slides or what? Just a minute. Yes, sir. Have you just set on the PowerPoint slide mode, sir? Yeah. Yeah, and then you have to click in area of that PowerPoint slide mode. In Okay. any area, just click and then use arrow key, right arrow key. Right arrow key. Where is that right In arrow? keyboard, sir. I think you are just using laptop system No, for. I am using desktop. Just then use your keyboard right arrow key, sir. Yeah, I am doing that. But it I is am not doing moving, that. sir, here. It's not moving. Is it, Yes, I sir, can. in PowerPoint mode, sir? Slideshow mode? Is it in slideshow mode, sir? 1 minute. Let me go for the. Now it's in slideshow mode. Are you able to see my presentation? Yes, yeah, your presentation is No, visible, sir. sir, but Actually. it is the left-hand panel is also showing the sorter view and the slides are being shown. If you can So that's move the fine. slides So I from the can left. start. Yes. Okay. Okay. So sorry for this technical glitch. This always happens. Anyway, let me start with the SARS-CoV-2, which started all the way in December 2019, and almost 2 years have gone, and still we are in the glitches of this pandemic COVID-19. Now, what we need to understand, so many times people ask this question, from where do these pathogens come from? This is $1 million question. It's not only SARS-CoV-2 first time affected the world. There were many viruses which now and then in the last centuries have affected the world in a very adverse manner that led to the high morbidity and high mortality. If you see this, this is the coverage on Time magazine for viruses, because you can understand how much impact they have on our societies, that this particular famous magazine from United States of America actually put on their cover page. This starts from flu. This includes SARS-CoV-1, now SARS-CoV-2, so on and so forth. Excuse me, sir. Yeah. Excuse me, sir. Our principal, sir, has just now joined and he would like to just welcome you and other participants. Then we will again continue with your Okay. talk. Okay. Okay. And sir, meanwhile, sir, you share whole screen for slide sharing, sir. 1 minute. Let me go. So what are you saying me? Let me Just a minute, understand. sir. I'm following. Ah, बोलिए. Honorable Principal, sir, please welcome the participants and also our guest for today. मैं सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूं। उदय प्रताप महाविद्यालय परिवार की तरफ से सभी का स्वागत है। और जो आज के कीनोट स्पीकर हैं प्रोफेसर सुनीत सिंह, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपका स्वागत है। और निश्चित रूप से जो ये आज का लेक्चर है, इससे जितने भी हमारे ग्रेजुएशन स्तर के बीएससी और एमएससी के जो विद्यार्थी हैं उनको फायदा होगा।
और और सिंह का स्वागत है। लेक्चर जारी रहना चाहिए, तो आगे नहीं सर, आप उसको नॉर्मल मोड में रखिए, वहाँ अभी प्रेजेंटेशन मोड मत रखिए सर पहले। This kind of science and society programs will definitely help the people around our society, the local areas, to know more and more about the problems that are being faced in the society. The problems can be resolved easily, and if we try to call such important and eminent personalities for our talk or for deliberation or for presentations, we are directly in connect with such eminent personalities, and in an easygoing way, we are actually placing our challenges to the society. The society and all the civic bodies can definitely come forward, come together to meet out these challenges. Once the students know about these challenges in the society, they will come, they will put up their efforts, they will try to understand science, and definitely our society will start improving. So I would like to encourage all the participants who are putting up their questions that your questions will be answered today. And I would also like to announce that this will be a lecture series. And in this lecture series, we will have several lectures. One day we will take up or put up a particular challenge, and we will call eminent personalities to cater your questions, your queries, and also to help all of us to come out of such situations. So today it is COVID-19, which is threatening us once and again. It is with these kind of programs that the students will try to learn the intricacies and try to learn the various problems being faced, and also what are the future challenges of COVID research. So today it's going to be a very interesting talk by Professor Sunit Kumar Singh from BHU. Is going to deliberate on COVID-19, also regarding the future challenges and what are the intricacies that has been with us and how far we have reached with us, with how far we have reached with the COVID. So I think today's lecture will really be very interesting, and I once again invite Professor Sunit Kumar Singh.
हेलो, हाँ, ठीक 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 ठीक। So thank you to Professor D.K. Singh, the principal, UP College, Banaras, and Dr. Tumul for organizing this wonderful program under DBT Star Scheme. And I think most of the students and others interested in COVID-19 will certainly be benefited by this program, and this is the best part of the any scientific activity which can be done from where you are in spreading the information all the way generated in the lab to the common public, and answering their queries and removing their whatever misunderstandings if they are having any in the case of the COVID-19. So far, as you know, COVID-19 is a disease and SARS-CoV-2 is a virus which caused COVID-19. Since December 2019, we have been suffering from this particular outbreak of the SARS-CoV-2 very badly. It's not our country; it's a whole globe, and the adversities are not only in front of health. Those are multidimensional, affecting the growth of the economy of the country, affecting the public movement, affecting the various industries like tourism and all. So overall, economic as well as health are very important sectors which are really being affected by this COVID-19 disease. Now we have to understand that this is a disease which has not come first time to the planet. There have been very many diseases starting all the way from Spanish flu, if you remember. If you remember, SARS-CoV-1 outbreak, and if you remember Middle East respiratory syndrome virus outbreak. So all these affected now and then to the society. And now this slide, as you know, Time is a very important magazine, quite famous for covering the important personalities of the world. And now you can see the drastic impact of these viruses once in a while, that affected the human health that badly that even Time has covered on its cover page. Now, if I take you to the emergence of zoonoses, what do I mean to say by zoonoses here? Zoonotic diseases are those diseases which transmit all the way from animal to humans. If you see the upper part of this slide, there are West Nile virus, HIV, Ebola, Hendra, Nipah, MERS. Means these are the viruses which really affected the world. Now if you come to the lower portion of this slide, you will see mostly these are respiratory pathogens, starting from Spanish flu, which affected our global population in a very bad way, and that led to 50 million deaths. And later on, we have seen Asian flu, Hong Kong flu, Russian flu, avian flu, so on and so forth. So this is the way pandemics affect the society. Now you can see here preparedness needs research. What kind of preparedness I am talking about here? I am talking about disease preparedness from public health point of view. If you remember 2003, when the cases of SARS coronavirus, when I say SARS coronavirus, then that means you should take the message that I am talking about SARS coronavirus 1, SARS-CoV-1, which affected the society, but that the transmission was almost restricted. It didn't go far and wide.
But if you see SARS-CoV-2 really affected the global population so badly. Now, this slide is giving a message to you that we had some kind of preparedness which we developed at the time of SARS-CoV-1 outbreak, that led to the that added as a effective response in terms of a strategic move for containing SARS-CoV-2 at various angles, like when, if you remember vaccination drive which we are getting today, and you remember that before 2 years we were in the process of development of COVID-19 vaccines. People ask very many questions how a vaccine can be developed in 2 years. They should understand that when SARS-CoV-1 outbreak took place in 2002 to 3, at that time pipeline was almost ready, but pandemic ended, so scientists didn't move further in the direction of developing a particular vaccine. But we had a pipeline ready, and that pipeline really helped a lot during SARS-CoV-2 outbreak for development of vaccines. Now question comes, how a animal virus moves to the human population, how this infection happens. We must understand that in most of the cases, zoonotic infections start when we do some kind of ecological imbalance. You will ask me, what kind of ecological imbalance? You can understand that on the name of industrial development as well as other infrastructure development, globally the forest population the forest cover has been actually reduced. Now you can understand that most of the wild animals live in these areas. So as we have a right to live in our area, that is the whatever village or city, the wild animals have also all the rights to be in the forest where they can carry on their activities. But when their habitat was being eroded, or they lost their habitats by our invasions, I mean to say human population invasion, then what happened? Those wild animal populations start overlapping with the human population, and from there chances of outbreaks increased. Now question comes, the exposure, infection and spread. See, these four are very important steps for the infection of any animal virus to the human being. First, what happens? Human population will be exposed to that virus. Now, virus will try its compatibility. It's not, as I say every time, it's not easy for a virus to jump from one species to another species. The reason there is a species barrier, you will ask me what kind of species barrier? There are antiviral factors, there are other virus restriction factors. It's not easy that they will provide direct access to viruses to enter into the human population and start replicating. For that, viruses have to change, they bring change in their genome, and that's what we are seeing currently, that there is a lot of mutation in the SARS-CoV-2, and now we can see in terms of various variants of concern, starting from alpha, beta, delta. Currently we are suffering from the Omicron. So all these things, so this is the process of mutation, is the process of adaptation of a virus inside the human population.
Now, how do viruses change their basic host range in order to infect new hosts? Here I would like to tell there are some generalist viruses and there are some specialized viruses. What do I mean say generalist versus specialist? Generalists are those viruses who can enter into the host cell by utilizing various molecules as a receptor. I mean to say there is not much specificity in terms of receptor, but specialist viruses are those which are having a kind of specificity in terms of binding to a host cell receptor, as we are seeing in the SARS-CoV-2. But remember here, SARS-CoV-2 is binding with the angiotensin converting enzyme to ACE2 receptor, and the SARS-CoV-2, which is currently even circulating in the animals, take example bat, that also binds with the AC2 receptor of bat, but it's not easy for that virus to enter in the human population and start binding with the ACE2 receptor. So there is a sequence variation in between the ACE2 receptor of human being as well as bats. So the receptor binding motif needs to be a little bit tweaking. That's why animal virus takes years and years in terms of developing adaptive features in order to infect human population. What are anthropogenic factors? There are very many factors, as I have just narrated down to you: population growth, urbanization, migration, and human behavior. There are behaviors nowadays. People go to wild habitats for hunting and gathering to acquire their bushmeat. All these practices somewhere give a chance to the wild animal viruses to spill over into human population. If you just see this slide, you will enjoy this. There are two portions. One is the A, another is the B. A portion, you can see, just I have given the bat as an example of wild habitat, and here domestic, and here human society. So what I mean to say, if you remember, there was a time when wild habitat has a clear delineated boundary from domestic animals to the humans. Now, due to all these anthropogenic factors which I have just narrated to you in the previous slide, that allowed the merger of the boundaries of wild habit, domestic animals, and human population. So such kind of overlap always gives a chance of animal viruses to spill over into the human population. Just I will come to the SARS-CoV-2 rather than going other details. So SARS-CoV-2, there are very many viruses in the SARS. This belongs to the coronavirus, and the order is nidovirales. And here, what happens? There are four kinds of coronavirus: alpha, beta, gamma, delta. And you can see alpha coronaviruses have been moving in our population for a long time, and that kind of infection used to give a kind of cold and flu kind of symptoms, and that was self-contained kind of diseases. Always beta coronaviruses have given a big task to the virologists and clinicians and even public health specialists to handle the issue. If you remember SARS-CoV-1 2002, that outbreak also gave a tough time to the health machinery to settle with. And then it came the Middle East respiratory syndrome coronavirus in year 2012.
and that also led to the heavy mortality, although transmission rate was less. So mortality rate was high, but transmission was less. So what do I mean to say? Not much population got affected, and it was just contained somewhere in the Saudi Arabia and Middle East region. Now we are seeing the SARS-CoV-2, which has really not left any corner of the world untouched, and we all are currently suffering from this kind of infection. This is the picture of SARS coronavirus. It looks like there are envelope proteins, there are membrane proteins, spike. I don't want to go in detail about these things, but just it looks like. And why we have given this as a coronavirus, why it is known as, if you see these spikes, this gives a kind of similarity somewhere close to the crown of old kings. That's why it is known as the coronavirus. Now, as I always told you, that ACE2 is ACE2 receptor is found in the bats also, even civet cats also, even in the humans also. But there is difference in some regions in terms of sequence. That's why it's not easy for a virus to jump, but it takes time to acclimatize and bring changes in order to develop a kind of power to circumvent the receptor binding in hindrance of the animals as well as the human being, and can bind over there. Now you could see here, this is the slide where I want to tell you how viruses, how SARS-CoV-2 led to the cytokine storm. So SARS-CoV-2, we had a different kind of variants. If you remember, Delta variant, which was responsible for second wave. What was the difference? What was the difference in between that variant as well as the variant which is currently in circulation, and that is the Omicron? Actually, Delta variant used to infect the lower respiratory tract quite very in most of the cases. But Omicron, in most of the cases, affects the upper respiratory tract. In the Delta, if you remember, people used to get lot of oxygen saturation problem. People used to get lot of respiratory issues, and then it was seen that so much cytokine and inflammatory mediators used to release in the lung, and that used to adversely affect the lung endothelial cells as well as lungs capability of diffusing oxygen. That's what this is the way it is. These are the lung alveoli, and you can see the lung alveoli, these sac-like, ball-like structures. They are surrounded by many small fine capillaries, and what used to take place during the what used to take place currently in the SARS-CoV-2, when it goes to lower respiratory tracts, it leads to lot of inflammation, which leads to the destruction of endothelials and heavy deposition of mucus and other stuff, and that creates a problem in oxygen exchange, and that leads to the oxygen saturation problem. Now, there was a time when there was a discussion, okay, COVID-19 is a disease which only transmit through droplets. What is the droplet? Here I would like to just tell you what are droplets. When we sneeze, when we loudly talk, when we cough, there are a lot of droplets generate from this during this process, and those drops whose size is close to 10 micron or above, we say them as a droplet, and anything lower than 5 micron size or smaller than 5 micron size is known as a kind of aerosol. So, whenever you sneeze or cough, there is a mix of this. It's not that there is no controlling mechanism which can tell our system, okay, now only droplets will be releasing, or aerosols.
So what I mean to say, and since beginning I used to say, means you can't differentiate. It's a both, and I would say still now it has been seen it's more aerosolic than the droplets, unless and until anybody go and touches the area. So this was the case. Now coming to this, you guys know, I need not to tell. So anyone who wants to follow I think COVID safe behavior, they have to do all these things. They have not to they have to avoid in growing bigger kind of crowd. Respiratory etiquette should always be there. Even if it is not COVID, we must learn to follow respiratory etiquette. Now, this is the slide. We say this is the Spanish cheese model. What is this Spanish cheese model? When you use cloth mask, and then you use social distancing also, and you start cleaning and disinfecting your hands, you see, if you follow all these things, then you will see there are least chances to get infected in terms of public's COVID-19 safe behaviors. But yes, of course, you have to get vaccinated. These are the just things which so I will little bit tell you here in the case of the this what is this slide? So this slide tells that R0 is this is known as the reproduction rate. What do I mean to say? If RTR R0 is 1, it means one infected person can infect only one person. When it is 4, you can see one infected can infect 4, and then each one of them can infect 4. So that's the way community transmission happens if we don't follow COVID safe behavior. That's why it is suggested that follow COVID safe behavior. There is a science behind that. Now, infection rate. Here, people should not get panic. It's not COVID-19 where infection rate is very high. Measles has even more higher reproduction numbers. You can see that ranges 12 to 18. We are thankful again here to vaccine of, you remember during childhood kids are given MMR vaccine, measles, mumps, rubella combined vaccine, and that's why kids remain safe. I would like to tell here there were some anti-vaxxers. There have been anti-vaxxers in each and every country. Their numbers might vary, and in Europe they always oppose the measles vaccination. You will not believe that very many deaths happens there due to measles every year. So here what I want to tell with this graph, here just this is the graph telling you when uncontrolled transmission happens, government put lockdowns, government put several restrictions in terms of gathering, in terms of travel, so on and so forth. And as a community, as a general public started thinking what is need of this lockdown. Now I will tell you, if you see our first outbreak really, if lockdown would have not happened at that time, this uncontrolled transmission would have gone further. So lockdowns helped in at least little bit flattening of the curve in order to strengthen the health and other infrastructure needed to control the pandemic. So all these things are there. I won't go in detail, and I think this is a high time when I would like to go for question and answers rather than just I speak and people listen. So thank you very much. Dr. Tumal, Thank you over thank to you you. so Thank much. you. Thank you so much, Sunit Singh sir.
for your lecture, and we have now come to know more of the intricacies about the SARS-CoV-2, and it was really good listening to you since you have been working on this topic and you have several research papers being published. Now, there are few questions by some of the students which I would like to take up. And if anybody wants to directly join to the StreamYard, if you have my number, please send me a WhatsApp request so I can make you live. You can yourself ask the question, and that will be the beauty of this kind of interaction program. So this is what I'm announcing. So you can write to me through WhatsApp if you have my number. So one of the participant, Pratiksha Upadhyay, she has asked two questions which I would like to read around. And if Pratiksha Upadhyay is listening to me, if you want to join live on the stream, you can come up, we can send you the link. So Pratiksha Upadhyay has written climate change and global health policy are largely treated as separate issues by the public and media. Do we need to adjust our thinking? Absolutely. Nowadays, I think this is very much required, and currently on global scale, we are talking about One Health approach. One Health approach is the approach where you cannot deal the human health and animal health and the climate issues all in a very separate manner. And if you want to have really anything effective in controlling such kind of outbreak, you have to bring the experts from veterinary, bring the experts from ecology and environment, bring the experts from virology and our clinicians together in order to develop any framework. So if we want to really control such kind of outbreak, we must have all these things together. Another query, sir. Does air pollution increase the risk of getting coronavirus? Does it make symptoms more worse? Yes. So as you know, Pratiksha, that air pollution itself is a problem for different lung issues related, starting all the way from allergy to asthma. And if your lungs are not healthy, and if one gets, COVID-19, during that condition, yes, severity can be increased. So what is now recommended, that and the best example, you would have seen that the people suffering from comorbid conditions like asthma and other COPD, such kind of diseases, they had suffered very badly. So yes, pollution might not be directly increasing the infection, but pollution will be indirectly complicating the whole process of pathology, and I think that is something one has to understand. Thank you. One more question from Deepak Vishwakarma. Why many countries have more dangerous effects of COVID compared to India? Yeah, this is a very good question, and I think there are multiple factors for that. Number one, if we see age distribution, if we compare our country with the Western world, we will find that we have more younger population, and it has been seen that younger population has cope up in most of the cases with the severity of the infection or mild infection. So age distribution is one issue. Second issue, if you see currently the rate of vaccination in India compared to other parts of the world, in India at least 91% population have been vaccinated at least with the single dose, and almost 75% population got double doses. So what do I mean to say? There are less number of anti-vaxxers
in India compared to other countries, if you would be observing news, you will see there are rallies and other things to go against vaccination. I think this kind of attitude also helped India. So these 2 points have played major. Okay, one more question, sir. What information do antibodies to SARS-CoV-2 tell us about how to respond to COVID-19? So this natural antibodies you are talking, can you, because there was difficulty in listening, can you repeat the question, please, Dr. Tumul? What information do antibodies to SARS-CoV-2 tell us about how to respond to COVID-19? Absolutely, absolutely good question. So what happens is, when any such infection happens, there is a development of antibody. But unfortunately, with the RNA viruses are having an ability to acquire more mutations during the process of replication. So if there is any RNA virus infection and antibodies have targeted antigen and a kind of antibody development happened, either neutralizing or non-neutralizing, then that remains there. But as you see in the SARS-CoV-2, variants like Omicron have got almost 59 mutations in its spike protein, almost 30 mutations in its receptor binding region. So any antibody which was effective against the receptor binding region of other variants is almost doing nothing in terms of antibody development for the Omicron. But remember, when we talk about the protection with vaccination, it's not only antibodies which protect us, there are a lot of T cells, and actually these mutations can't disguise the T cells. So whatever protection we are currently having, T cells are having a major role in that. Thank you. Thank you, sir. So, one more question. सर मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा हिंदी में भी अगर डिस्कशंस हो तो हाँ बिल्कुल पूछिए, सोसाइटल हिंदी में इम्पैक्ट ज्यादा होगा. हाँ तो बिल्कुल बताइए, हिंदी जी, में बताइए जी. एक क्वेश्चन है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है SARS-CoV-2 का वो ऑलरेडी है और इसमें म्यूटेशन बहुत ज्यादा होती है, संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं. तो अगर कोई वैक्सीन बनाया जा रहा है तो क्या कोई पर्टिकुलर वैक्सीन एक परमानेंट क्योर हो सकता है? देखिए, जब हम परमानेंट क्योर की, देखिए अगर आप एक एग्जाम्पल लें, इसके पहले अमेरिका में फ्लू शॉट्स हर साल लगाए जाते हैं. फ्लू शॉट्स हर साल लगाए जाने का कारण क्या है? क्योंकि फ्लू वायरस भी आरएनए वायरस है और वो भी हर साल या 2 साल के बाद अपने आप में चेंजेस लाता है. तो होता यह है कि जब हम आरएनए वायरस की बात करते हैं और हम यूनिवर्सल वैक्सीन की बात करते हैं, तो कंसेप्ट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें हमें वायरस के उन रीजन्स को टारगेट करना होगा जो कि कंजर्व्ड रीजन्स हैं. कहने का मतलब जिनके ऊपर म्यूटेशन, जहां पर म्यूटेशन की संभावनाएं काफी कम है, और ऐसी studies चल रही हैं, and hope that we may have something in the form of pan vaccine in coming days for SARS-CoV-2. Thank you. I have Dr. Ashwini Kumar Nigam from my Department of Zoology. He is Yes. assistant professor. He also wants to ask a question. Sure. Sir, my question is personally, that there is a notion that antibody-based immunity against COVID-19 is short-lived, and such type of news are also there in various newspapers and also in various publications. But sir, I want to know whether there is a rule of cell-based, or we can specifically say role of immunological memory cells. Is there a देखिए, role of these cells in combating virus or such type of infection in the case of COVID-19? Got it.
एक्चुअली ऐसा है कि जब बॉर्डर पे शांति हो तो उस वक्त वहां फौजों की तादाद बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता। जब बॉर्डर पे कोई दिक्कत हो तो नंबर ऑफ गार्ड्स और नंबर ऑफ लोग वहां बढ़ाए जाते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, यस नो डाउट कोरोना वायरस को हम लोग बहुत पहले से पढ़ते रहे, जानते रहे कि इसमें इम्यूनिटी बहुत दिन तक नहीं रहती, लेकिन मेमोरी सेल्स विल ऑलवेज बी देयर। तो ना जो एंटीबॉडी का लेवल घट जाना, एंटीबॉडी का लेवल घट जाना, जब आप ठीक हो गए तो आप क्यों चाहते हैं कि आपके शरीर में एंटीबॉडी का लेवल हाई हो? क्योंकि पैथोजन तो वहां रहा नहीं, पैथोजन नहीं रहा तो आपके एंटीबॉडी को नीचे जाना है, और ये रूल है इम्यूनोलॉजी का। अब सवाल यह है कि जो मेमोरी सेल्स हैं वो बैठी हुई हैं, दोबारा इन्फेक्शन होगा, दोबारा जो है जर्मिनल सेंटर रिएक्शंस होंगे और एंटीबॉडी का रिलीज होगा प्लाज्मा सेल्स के द्वारा। नंबर एक। नंबर दो, अभी हमने बताया कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जहां की टी सेल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, टी सेल मेमोरी सेल्स भी रहती हैं। और आप ये जानिए कि आज की तारीख में ओमिक्रॉन, जिसको हम माइल्ड बोल रहे हैं, या कि ये भी एक तरह की गलत फहमी है, एक्चुअली माइल्ड कुछ नहीं होता, माइल्ड एक कंपैरेटिव टर्म है। माइल्ड जो चीज हमारे लिए है वो आपके लिए नहीं हो सकती, जो आपके लिए है वो हमारे लिए नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं कि अभी जो आप देखिए कि डेल्टा के बाद और उसके पहले के आउटब्रेक के बाद हमें इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन जनरेटेड इम्यूनिटी भी हमारे अंदर है, और उसके बाद वैक्सीनेशन का भी कवरेज बहुत जबरदस्त बढ़ा। तो कुल मिला के ये हाइब्रिड इम्यूनिटी है जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है उस ओमिक्रॉन के दौरान, कि हम लोग बहुत कुछ ज्यादा एडवर्सिटीज का सामना नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वैक्सीनेशन जरूरी है। Thank you, sir. Thank you for clarifying the doubts. Next question is, this is a very dynamic virus and it keeps on changing. तो क्या जो वैक्सीन्स बन रहे हैं वो जब ये वायरस म्यूटेट होता है तो क्या उस वायरस के अकॉर्डिंग वैक्सीन्स भी चेंज होनी चाहिए, और ये कितना जल्दी हो सकता है जब भी एक नए बार कोविड का नया कोई म्यूटेशन होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स हैं, आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स में ट्वीकिंग आसानी से की जा सकती है, और ट्वीक करने के बाद वो जल्दी से उसको सप्लाई किया जा सकता है। लेकिन पहली बात तो ये है कि इतने सारे वेरिएंट के लिए वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन बनाना, ये मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा फीजिबल होगा। और अगर बनाना संभव भी हो गया तो इतनी बड़ी ग्लोबल पॉपुलेशन में उसको पहुंचाना एक साथ बहुत बड़ी मुश्किल होगी। अभी जैसे ओमिक्रॉन स्पेसिफिक वैक्सीनेशन की बात हो रही है, तो ओमिक्रॉन जब तक आप वैक्सीन बनाएंगे तब तक तो इसका पीक फ्लैट हो चुका होगा। अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दूसरा हमें वेरिएंट न देखने को मिले, लेकिन तब तक आपने जो इसके लिए स्पेसिफिक बनाया वो तो गया। अब आज की तारीख में आप वो जो नेक्स्ट आएगा वो क्या होगा, कैसे होगा, वो तो भविष्य बताएगा, ईश्वर करे ना आए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये वेरिएंट स्पेसिफिक जो वैक्सीन्स हैं ये बहुत ज्यादा जो है ये आसान काम नहीं है कि इनको हम पॉपुलेशन लेवल पे इतना स्केल अप करके लोगों को एक निश्चित समय तक पहुंचा सकें। इसलिए पैन वैक्सीनेशन या यूनिवर्सल वैक्सीनेशन में भी ए बेटर स्ट्रेटजी देन द वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीनेशन। थैंक यू सर। वन क्वेश्चन बाय अजीत प्रताप सिंह। अगर आप लोग अपना छोटा सा एड्रेस लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, आपको मैं आइडेंटिफाई भी कर पाऊंगी आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो। अजीत प्रताप सिंह ने पूछा है, बाय टारगेटिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कैन वी डेवलप मोर इफेक्टिव आरएनए वायरस वैक्सीन? More effective RNA virus vaccine, yes. Reverse transcriptase has been a target, but sometimes you have to see the feasibility of development too. Yes, but reverse transcriptase is a kind of important target if it can be targeted effectively. Yes.
क्या हुआ, हैंग कर गया क्या? लो डॉक्टर तुमुल, यू आर फ्रोजन नाउ, योर स्क्रीन इज फ्रोजन, आई एम नॉट एबल टू लिसन यू। हाँ सर, ये हम जानना चाह रहे थे जी जी डीके सिंह साहब बताएं। कि ये जो ओमिक्रॉन वाली थर्ड वेव आई है, जी और इस थर्ड वेव के बाद सर क्या उम्मीद है कि जो आगे फ्यूचर जो है इस वायरस का जो है किस प्रकार से रहेगा आगे? देखिए, हाँ बिल्कुल सही, बड़ा बड़ा कठिन प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि इतना आसान प्रेडिक्शन इसका है नहीं। लेकिन जो अभी तक हम लोग सोच रहे हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि आगे आने वाले 4-5-6 महीने तक शांति रह सकती है, कोई नया वेरिएंट हो सकता है, ये हमारा प्रेडिक्शन है कि ना आए। लेकिन अभी हमको कुछ आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए कम से कम एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम, जो लगभग शायद साल भर या उससे ऊपर हो, उसको देखना होगा। अगर तब तक नहीं आता तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर तो चैलेंजेस हैं। सर वैक्सीनेशन जो है प्रभावी, ये हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वैक्सीनेशन प्रभावी रहा है पूरी तरह से? बिल्कुल रहा है। अक्सर लोगों के दिमाग में एक गलत कंसेप्ट आ जाता है कि वैक्सीन उन्होंने लगवा ली है तो उनको इन्फेक्शन नहीं होगा। ये बहुत गलत कंसेप्ट है। वैक्सीन लगाने के बाद इन्फेक्शन ना होने की कोई गारंटी नहीं है। वैक्सीन का काम इतना है कि वो जो आपके अंदर तमाम सारे कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे, जो आपको सिवियरिटी की तरफ ले जा रहे थे, जो आपको आईसीयू में एडमिशन करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा था आपको, उससे आप बच पाएंगे। तो जो एडवर्सिटीज हैं या जो सिवियरिटी है वो घटेगी, और शायद उसका घटना ही पॉपुलेशन लेवल पे एक बहुत बड़ा फायदा है वैक्सीन। निश्चित रूप से सर जो है इस बार जो ओमिक्रॉन वाली वेव है, इसमें वो सिवियरिटी नहीं है जो पिछली बार हम लोगों ने डेल्टा वेरिएंट के साथ देखा। जी तो ये उम्मीद करते हैं, उम्मीद हम लोग ये कर सकते हैं सर, फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि इस पे सवाल बहुत सारे नहीं पूछे गए थे। तो फ्यूचर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले जो वेरिएंट होंगे उनका प्रभाव जो है, अगर कोई वेरिएंट आता है, ईश्वर न करे जैसा आपने कहा कि आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई आता है तो उसका प्रभाव बहुत ही माइल्ड होता जाएगा या और कम होता जाएगा, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। होप सो, बिल्कुल होप सो। क्योंकि अभी तक देखिए आप, अगर आप पहले भी गए हो, स्पेनिश फ्लू रहा या तमाम तरह के पैंडेमिक आए, तो पैंडेमिक कोई सदियों तक चलने वाली चीज नहीं होती है। पैंडेमिक 1 साल 2 साल, उसके बाद उसको कम होना है। हाँ जाहिर सी बात है, इस दौरान जो तबाही या जो हानि हुई उसको तो हम वापिस नहीं लौटा सकते, लेकिन हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वी आर होपिंग द सेम कि कमिंग डेज में इसका जो है धीरे धीरे प्रभाव कम होना चाहिए। जी, तो एक नए प्रकार का जो है पूरा जो माहौल जो है वो जो चेंज हो गया था, पूरा जो बदलाव आ गया था, उस बदलाव से धीरे धीरे हम लोग एक तरह से निजात पाते हुए सा दिख रहे हैं, ऐसा सर हम आपके लेक्चर से अनुमान लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें भी लगता है कि हम लोग उस दौर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सर। तो जो हमारे तमाम जो स्टूडेंट हैं और जो लोग भी इस पूरे आपके इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं सर, उन सारे लोगों को बहुत सारी जानकारी जो है मिली है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे जो है इस प्रकार के लेक्चर सर आपका मार्गदर्शन हम लोगों को आगे भी क्योंकि आपने, हम तो रहते हैं, डॉक्टर तुमुल कई प्रोग्राम कराती रहती है, बुलाती रहती है, तो यूपी कॉलेज तो हम फिजिकली भी आए। अभी तो टाइम ऐसा नहीं है कि फिजिकल मूवमेंट ज्यादा हो, लेकिन हाँ ठीक है। डॉक्टर तुमुल, आपके पास कोई और प्रश्न है? जी सर, प्रश्न तो बहुत आ रहे हैं, मैं कुछ प्रश्न ले रही हूँ। उदय प्रताप कॉलेज से ही अतुल विश्वकर्मा ने पूछा है जी कि current situation and scenario, is it better to choose virology stream as successful career option because every time new strains found? ये डेफिनेटली सर, चूंकि एजुकेशन सिस्टम से हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई इस लाइन में इंटरेस्टेड है रिसर्च में, तो एक डर बना हुआ है समाज में कि क्या हम इस लाइन में रिसर्च में आगे बढ़े या नहीं। अगर इस तरह का
चैलेंजेस इतना जल्दी जल्दी आता रहेगा सोसाइटी में, तो क्या हम एज डॉक्टर या हम एज रिसर्चर उस चैलेंज को सोसाइटी के लिए कितना निभा पाएंगे? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे याद है आज से 15 साल पहले जब मैं हैदराबाद CCMB में फैकल्टी हुआ करता था और जब मैं लोगों से बताता था, लोग पूछते थे किस पे काम कर रहे हैं, हम कहते थे वायरस पे, तो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन क्या पता था 15 साल बाद जो है वायरस से तबाही मचाएगा, और आज वायरस की वायरोलॉजी एक प्रायोरिटी बन चुकी है। बिल्कुल, देखिए वायरोलॉजी हमेशा से एक प्रायोरिटी थी और वायरोलॉजी के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन कम थी। जहाँ तक सवाल है एजुकेशन का, हाँ हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम, कुछ बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं ऐसी जहाँ पर इस तरह के स्पेसिफिक प्रोग्राम हैं, और हम भविष्य में हो सकता है हम ही शुरू करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले दिनों में कभी। लेकिन इसके लिए चूंकि स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज की जरूरत होती है, जैसे यू मस्ट हैव वन BSL-2 फैसिलिटी, वन यू मस्ट हैव BSL-3 फैसिलिटी टू ट्रेन द स्टूडेंट हाउ टू हैंडल द वायरस। क्योंकि देखिए वायरस को पढ़ने के बाद अगर आप निकल रहे हैं डिग्री लेके, तो उसकी हैंडलिंग से लेके बायो सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशन, इन सारी चीजों के बारे में एक को अच्छी जानकारी के लिए सारी चीजों का संयोजन जरूरी है। इसीलिए वायरोलॉजी को डिसिप्लिन लेवल पे ले जाने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हाँ बिल्कुल, नो डाउट इट हैज बीन इन डिमांड, it will always be in demand from human health point of view. Whether there is a pandemic or not, it doesn't matter. Right. Welcome, Dr. Pragya Pandita. Thank you. Pragya has joined us and she wants to ask few questions related to this burning topic. So you can ask Dr. Pragya. Yes, Pragya. So good afternoon, Professor Sunil Singh. Good afternoon, our principal, Dr. Singh, and all the members. Sir, मेरे दो questions है. In plants, we always hear about vertical resistance and horizontal resistance. ये वायरस में हल्का सा उसके जो बेसिस है, DNA के जो RNA बेसिस है वो चेंज हो जा रहे हैं, तो म्यूटेट करके एक नया स्ट्रेन बन जा रहा है. तो एक एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं अपने प्लांट में फॉर ब्रिंगिंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑल द वायरस स्ट्रेन. तो whether this antisense RNA technology can be utilized for protection against SARS-CoV virus? देखिए ऐसा है, एंटीसेंस की जब आप बात करती हैं तो एंटीसेंस आपका सेंस के अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है ना. अब इसमें जब म्यूटेशन ज्यादा हो रहा है तो म्यूटेशन किस रीजन में कहाँ कब होगा, ये RNA वायरसेस की, ये तो काफी कम म्यूटेट होने वाला वायरस है कोरोना. बाकी नॉर्मली जो अन्य RNA वायरसेस हैं उससे ज्यादा म्यूटेट हो सकते हैं. तो मैं कहूंगा कि एंटीसेंस टेक्नोलॉजी आप इफेक्टिवली यूज कर पाए इस पर्टिकुलर RNA वायरसेस के स्प्रेड को कंटेन करने के लिए, ये थोड़ा बड़ा चैलेंजिंग होगा. ये जहां पर आपका सेंस स्टैटिक होता है वहां तो एंटीसेंस रियली इफेक्टिव होगा. जहां पर सेंस मूविंग टारगेट हो जाए वहां पे एंटीसेंस आपको हर दिन और कैसे आप कहां तक चेंज करेंगे, एक इश्यू है. पर ये जो सर रेस स्पेसिफिक जो स्ट्रेन की जो स्पेसिफिसिटी है, अगर फ्यू बेसिस के लिए है, तो क्या एक ब्रॉड टर्म जो रेजिस्टेंस हम लोग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, विच इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑल द स्ट्रेन, जैसे डेंगू का एक हम देखते हैं कि एक स्ट्रेन है जो कि बहुत ज्यादा फैटल है जिसमें लोग ICU में पहुंच जाते हैं, और एक स्ट्रेन है जो बहुत माइल्ड है जिसमें लोग फीवर से ही सिर्फ निकल जाते हैं. तो कुछ इसी तरह की चीज तो इसमें भी देखने में आई कि Delta-2 में कुछ लोग ICU में पहुंच गए, कुछ लोग को बहुत माइल्ड सिम्टम्स रहे. हम आपको करेक्ट करना चाहेंगे, डेंगी वाले केस में भी डेंगी का कोई भी चीज माइल्ड नहीं है. डेंगी के 4 सीरोटाइप हैं, डेंगी 1, डेंगी 2, डेंगी 3, डेंगी 4. और डेंगी 1 और सबसे खतरनाक चीज डेंगी में यह है कि अगर आप एक सीरोटाइप से इन्फेक्ट हुई हैं तो दूसरा सीरोटाइप जब आपको इन्फेक्ट करेगा तो आपके अंदर जो एंटीबॉडीज पहले सीरोटाइप से बनी हुई थी वो इफेक्टिव नहीं होंगी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहैंसमेंट.
तो होता ये है कि डेंगू फीवर जहां तक नॉर्मली होता है वो अक्सर तब होता है जब आप एक सीरोटाइप से इन्फेक्ट हो। नॉर्मली जब डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम की स्थिति आती है तो वहां आप हो सकता है कि मल्टीपल सीरोटाइप से जो है पीड़ित हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है आज भी डेंगू में तो 4 ही सीरोटाइप हैं, उनके लिए भी आज तक हमारे पास जो है इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है। आजकल एक स्टडी चल रही है, एक सो कॉल्ड डेंगू वैक्सीन आई हुई है, लेकिन कितनी इफेक्टिव है टाइम विल टेल। लेकिन ये चैलेंजेस हमेशा आरएनए वायरसेस के साथ रहते हैं, इट्स नॉट इजी टू हैंडल। तो सर इस तरह से तो इसके लिए कभी वैक्सीन बन ही नहीं सकती, क्योंकि जिस पर्सन के अंदर ये इन्फेक्ट करेगा उसके हिसाब से इसके बेसिस चेंज हो जाएंगे, तो हर बार ये म्यूटेट करेगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आज तक अमेरिका में फ्लू के खिलाफ हमारे पास कोई यूनिवर्सल वैक्सीन है? कोई नहीं है। तो फ्लू के लिए आप हर बार प्रेडिक्ट करते हो, एक कॉकटेल बनाते हो और हर बार आप इंजेक्ट करते हो। तो आपको अब अगर यही चीज स्टैटिक होती, रेट ऑफ म्यूटेशन कम होता, इनके अंदर जो है प्रूफ रीडिंग कैपेसिटी होती रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान, तो ये चीजें हमको नहीं देखने को मिलती। जैसे डीएनए वायरसेस, डीएनए वायरसेस की अपनी एक, वहां पर म्यूटेशन इतना नहीं है, लेकिन वहां पर लेटेंसी उनके अलग, लेटेंट इन्फेक्शन और तमाम सारे इश्यूज हैं। तो ये तो हमेशा आरएनए वायरस इज अ चैलेंज। व्हाई डोंट वी हैव ए वैक्सीन टिल डेट फॉर एचआईवी? We don't have. What do we have in our basket? That is antiretroviral therapy, and antiretroviral therapy can just prolong your lifespan, which was earlier for 4 to 5 years. Now people are living with HIV for 15 to 20 years. So prolong तो हो रही है life expectancy, लेकिन हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है. So this is a challenge with our. थैंक यू सर। तो मेरे ये 2 क्वेश्चन थे, क्योंकि प्लांट में हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक हो जाता है कि वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वाली कंसेप्ट है, दोनों सिस्टम काफी अलग है। हाँ, इसीलिए थैंक यू सर। थैंक यू तुमुल मैडम। Welcome, Dr. Pragya. It was nice that you joined our discussion session. और आपने जो सवाल पूछे वो बहुत पर्टिनेंट थे, और खास करके इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की जो बात डीबीटी करती है वो आप अप्रोचेस जो है वो हमेशा साइंस को आगे बढ़ाते हैं, रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे अंदर जब भी आते हैं तो रिसर्च के लिए मोटिवेशन ही मिलता है। आई होप आप भी इस डायरेक्शन में कुछ काम करेंगी। डेफिनेटली। Thank you for your question, Dr. Pragya. थैंक यू। आशुतोष द्विवेदी, कौन सा कॉलेज है? KNPG कॉलेज। SARS-CoV is a highly mutagenic virus. It will emerge surely, but lethality will be cut down due to vaccination. ये एक सजेशन है इनका, और ये सजेशन सभी का है कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत जरूरी है, और ऑलमोस्ट इट इज द नीड ऑफ द आवर। अब बूस्टर डोजेस भी लग रहे हैं, तो सभी को जब जिनका डेट्स हो लगवा लेना चाहिए, और ये एक चीज है जो हमें शायद आगे इन्फेक्शन से बचा पाए। One question Neha Mithiles has asked, sir, please help me with this question, that the role of vaccine in children and old age people, will it work as it has worked in the case of 18 to 45 age group? छोटे बच्चों में और 45 से जो ऊपर के एज ग्रुप वाले हैं, क्या उसमें भी ये वैक्सीन उतना ही कारगर होगा? जी, वैक्सीन कारगर होगा, खासकर बच्चों में। जहां तक सवाल है जो एजड पॉपुलेशन है, या पॉपुलेशन जो कोमार्बिड कंडीशन से पीड़ित है, या हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स की वो पॉपुलेशन जो कि रोज सीरियस कोविड-19 के पेशेंट्स को डील कर रही है, वहां पर बूस्टर्स के भी सरकार ने इंतजाम किए हैं, और ये लोग प्रायोरिटी में हैं, चाहे वो एजड पॉपुलेशन हो या पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम कोमार्बिड कंडीशन हो, जो या हेल्थ वर्कर्स हैं, तो वो बूस्टर के बाद उनमें और जो है उनका प्रोटेक्शन बेटर होगा, ये लिटरेचर कहता है। जी, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है मेरा, ये थोड़ा एवोल्यूशन से रिलेटेड है
हम लोग एवोल्यूशन स्टडी करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज करते हैं और बच्चे पढ़ते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। क्या ये वायरस भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है टू स्टडी द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वायरस? क्योंकि अगर हम ये 2019 से इसका ट्रेंड देखें तो it has evolved in several forms in different parts of the world. और एक जो थ्योरी थी कि अराइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बाद आया कि अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, कहाँ से ये अराइव कर रहा है। तो क्या ये वायरस आप जैसे रिसर्चर्स के लिए एक एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस रखता है? क्या इस तरह की स्टडीज की जा सकती है और इसको लेमार्किज्म और डार्विनिज्म से जोड़ा जा सकता है? आई थिंक कि बिल्कुल इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसी वायरस में अगर आप देखिए तमाम सारे ग्रुप्स हैं जो इवोल्यूशनरी वायरोलॉजी स्टडी करते हैं, वो ये पता लगाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि वो कौन सा, अगर ये एनिमल से ये ट्रांसमिट हुआ है तो कौन सा एनिमल है जो इसका रिजर्वायर रहा है वो, और अगर रिजर्वायर तक पहुंच हो गई तो वो कौन सा एनिमल है जिसके अंदर ये सर्कुलेट करता रहता है नॉर्मली थ्रू आउट द ईयर। तो इन सब सारी चीजों पे बात हो रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट्स आए हैं, ये जो नॉर्मल जो इनका वुहान का एक जो वायरस जो पेरेंट वायरस है उससे कितना डिस्टेंटली ये एक दूसरे से एग्जिस्ट करते हैं। तो यस, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट और ओरिजिन ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस। एब्सोल्युटली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हम लोगों का काफी अच्छा डिस्कशन का सेशन रहा और जितने भी क्वेरीज थे हम लोगों ने एक एक करके उठाया और आपने उसको बहुत ही सरल तरीके से बताया। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी आवश्यक रूप से लाभान्वित हुए होंगे। और आज ये इस आउटरीच प्रोग्राम का पहला लेक्चर था और ये बहुत ही अच्छे तरीके से सोसाइटी को एक मैसेज देगा कि हम लोगों ने ये जो आउटरीच प्रोग्राम के तहत जो चैलेंजेस को उठाया है साइंस एंड सोसाइटी के लिए, हम लोग हर दिन एक ऐसी ही चैलेंज लेंगे और हमारे समक्ष आप ही जैसे कोई विद्वान बैठेंगे और कभी होगा तो हम लोग और भी ज्यादा लोगों को जोड़ के और इस तरह के जो हमारे बर्निंग टॉपिक्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनकी क्या रेमेडीज हो सकती है उसको टेकअप कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी सर और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने हमारे डीबीटी के मेंटरशिप प्रोग्राम में, इस आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लेकर हमें बहुत अधिक लाभान्वित किया है और हमारे सोसाइटी को भी लाभान्वित किया है। हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। अभी जो लोग ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए हैं वो बाद में भी इसको देख पाएंगे और इससे समाज में जो मैसेज आप देना चाह रहे थे वो जरूर फैलेगा। लास्ट में सर मैं एक सेंटेंस में चाहूंगी कि आप जरूर कुछ ऐसा बताइए कि समाज को अभी भी क्या करना होगा इस कोविड से बाहर निकलने के लिए या अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आखिरी मैसेज केवल यही है कि इस तरीके के जो पब्लिक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं इसमें हम पब्लिक का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार केवल सजेशन दे सकती है, सरकार पॉलिसीज बना सकती है, लेकिन उस पर अमल जब तक हम आप नहीं करेंगे, हम लोग एक दूसरे को इसके बारे में नहीं समझाएंगे, शायद सरकार का विजन जो है और हम लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान तब तक नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि हम वैक्सीनेट अपने को कराएं, लोगों को उसके बारे में जो है मैसेज दें कि वो वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन सेफ है, चाहे वो कोई भी आयु वर्ग हो, और जो कोविड-19 सेफ बिहेवियर है इसका पालन करते रहें। धन्यवाद। हमारे प्राचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
मैं चाहूंगी कि प्राचार्य जी भी सर को अपनी तरफ से धन्यवाद दें। हमारे तरफ से सभी को धन्यवाद और स्पेशल थैंक्स प्रोफेसर सुनीत कुमार सिंह सर को कि आप जो है इस कार्यक्रम में आए और साइंस एंड सोसाइटी के लिए आपने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया और रिलेवेंट टॉपिक पे दिया है सर, और सभी लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। और अंत में आपने जो हिंदी में भी जो हमारे जितने भी हिंदी माध्यम के जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे भी आप वेल कनेक्टेड रहे, उनसे भी आप पूरी तरह से जुड़े हैं। और जो भी सवाल हैं, सबसे बड़ी बात है कि डिस्कशन सेशन इसका बहुत ही अच्छा रहा इस पूरे लेक्चर का। तो जो भी लोग जो भी जानना चाहते थे इस वायरस के संबंध में या जो भी पेंडेमिक के बारे में जो कुछ भी जानना चाहते थे, मुझे लगता है कि सभी समस्याओं का समाधान हुआ है और ये सभी के लिए अच्छा है। महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैं डॉक्टर तुमुल को भी धन्यवाद देता हूं कि इतने विद्वान व्यक्ति को, इतने अच्छे वक्ता को आपने आमंत्रित किया, और तुमुल सिंह और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। डीबीटी जो स्टार स्टेटस स्कीम जो हमारे महाविद्यालय में चल रही है, पूरे भारत सरकार डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का स्पेशल थैंक्स है कि उनके सौजन्य से ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को धन्यवाद कि उन्होंने पूरे मनोयोग से इस प्रोग्राम को देखा है, सुना है, समझा है, और जो भी जानकारी आपने दी है उस जानकारी पर हम सभी लोग चलेंगे और आगे भी जो भी जागरूकता कार्यक्रम होंगे उसमें आपकी जानकारी जो है वो हमारे लिए इनपुट का काम करेगी, और उस इनपुट के माध्यम से हम लोग आगे भी जो एनएसएस के कार्यक्रम होते हैं, जो आउटरीच प्रोग्राम जो महाविद्यालय की तरफ से चलाए जा रहे हैं, उसमें आपके द्वारा दी गई जानकारी का हम सभी लोग प्रयोग करेंगे। हमारे जो स्वयंसेवक हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं और महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं, वे सभी लोग आपके द्वारा बताए हुए जो सूत्र हैं उनका हम लोग पालन करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और स्पेशल मेरे तरफ से बार बार आपको धन्यवाद है कि आपने इतना अच्छा जो है लेक्चर दिया है। और सभी को, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जो भी लोग इस कई लोग, बहुत सारे लोग हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, हमारे अभी आज ऑनलाइन थोड़ी प्रॉब्लम रही बीच बीच में, तो आगे से जो भी प्रोग्राम होंगे हम उसको दूर कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और सभी की तरफ से, राजर्ष परिवार की तरफ से, उदय प्रताप कॉलेज की तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, जय राजर्ष। थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच। मैं सभी को फिर से धन्यवाद देती हूँ।